हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, ये भी पाइथन में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फॉर लूप स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है और लूप के लिए जब हमें कोई एक काम बार बार प्रोसेस करना है तो हम लूप फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होगा, पहले सीधा सिंटेक्स पे बात करते हैं। तो सीधा सिंटेक्स के लिए लिखते हैं फॉर, देन यू हैव टू यूज़ ए वेरिएबल in, and then you have to write some sequence. Okay, and then it will be your loop body. This will be the simplest syntax. So for is a keyword here, variable, user created element, and in is an operator here, or sequence. It may be a sequence of numbers here you can put, so it may be a list, tuple or a string. ठीक है, सो एक बार बनाते हैं एक एग्जांपल के साथ में। तो मुझे करना है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, सपोज जो हमने वाइल लूप के लिए वैसा ही। ओके, सो इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है लूप के लिए, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट एंड द स्टेप साइज। तो मुझे 1 to 5 लेना है, तो स्टार्ट पॉइंट क्या होगा मेरा, इट विल बी 1, देन स्टॉप पॉइंट क्या होगा 5 इंक्लूडिंग 5। ओके, एंड द स्टेप साइज मेरा होगा 1। ठीक है, सो फॉर is a keyword, then x is a variable that is created by me for this code in, and then you have to write a sequence will be either a list or a tuple. Okay, and you can use for suppose string लिखेंगे तो string भी हो जाएगा, बट अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं, हमें नंबर लेना है 1 2 3 4 5. This will be a sequence, and then you will be writing x here. Control S सेव करिए एंड F5, 1 2 3 4 5 आ गया है। बट यहाँ पे एक कंसर्न है अभी कि व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज द नंबर, लाइक इंक्रीज द नंबर टू सपोज 100. सो इज दिस पॉसिबल, फिजिबल कि यहाँ पे ऐसे ही मैं सीक्वेंस लिखूँ लाइक 1 2 3 4 5 अप टू 100? इट वोंट बी पॉसिबल. सो फॉर दैट, to save us, there is a function name is range. Okay, range function. And range function, what is the role of the range function is, it will generate a sequence, okay, as per the given input. So the formula for range is start, then you have to stop and the step size. Okay, this is the formula. So suppose if I give only one number, if I give 5 only, so in that case what will happen, it will generate sequence from 0 1 2 3 and 4. So by default, if you give me a single number, so in that case start will be treated as a 0 and step will be treated as a 1. You can notice it here, there is a difference of 1 only. Okay, suppose if you give two numbers, let me copy this and I will be pasting here. So suppose if you give me two numbers, then first number will work as a starting point and second will work as a stopping point. So it will be like this. And remember this one, if you whatever the number you gave as a stop, sequence will be generated one less up to that number. Suppose if you give 5, it will stop at 4. If you give n, it will be n minus 1. सो अगर मुझे 5 को इंक्लूड करना है तो मुझे यहाँ पे 1 + 1 करके रखना पड़ेगा, लाइक इट विल बी 6 here. ओके, सो लेट्स डू फॉर द स्टेप साइज. सो इफ यू गिव मी 3 numbers in this sequence like this, so what will be the output it will generate? It will be 1, then it will be 3 and it will stop because 5 इंक्लूड नहीं होगा. सो यही क्वेश्चन लेते हैं कि अब मुझे अगर रेंज फंक्शन से यूज करना है तो क्या करूंगा, आई विल राइट फॉर एक्स इन रेंज, मुझे लेना है 1 to 5. सो आई ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट विथ 1 and 5. So if I write 5, it will go up to 4. Yes, correct, it will go up to 4 because n minus 1. Okay, now I want to include 5, so I will write here 6 and then I will say print of x, and if I say run it, so first 1 to 5 will be of this one and next 1 to 5 will be of this one.
Okay, I hope you understand this one. Now you can change this number to anything. Suppose if you change this number to suppose 100, let's do this one. So up to which number it will generate output? It will generate from 1 to yes, correct, 99. Okay, let's run this one. So what number it will generate? It will 1 to 99. So suppose if I ask you, okay, can you give me all the numbers so which are odd in this sequence? So I have to write only here as a 2. Okay, and this will be your step size. So it will be 1, then plus 2. It will be 3, then 1, then plus 2 again. So it will be 5 in that sequence. It will generate all the odd numbers. You can notice down there. Here it is 1. So first, yes, 1 to 5 will be this one. Okay, don't get confused. 1 to 5 will be this one, and then it will generate all the odd numbers. So for the homework, what it will be? It will be like generate all the even numbers. Okay, and post me in the comment what will be your start point, what will be your stop point, and what will be your step size. Okay, thank you.